Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram. My name is Nikhil. Namaskaram, everyone. I'm Bani, and I welcome you all to the Sorry TV. All right, so we are coming late on this. Really late. First of all, apologies for that. हम काम करते हैं. बहुत काम. So we couldn't deliver this. But never rather than late. मतलब ठीक है. Never rather than late is fine. So we are coming late but never. हाँ मतलब ऐसा ही कुछ. ठीक है. So it's a big shout out to all the folks on the screen who have recommended this song to us. And a big shout out to Raven's Evil, who have always mentioned, please do the reaction on Facts. Actually, he just on all the videos that were released by us. Actually, he just got nailed us. I would say that we have to do this. And thank you, Raven. I know it's not your real name. I do not know why did you choose Raven's Evil, but let us know your real name also. But Game of Thrones is over, so you can come back to your original name. Alright guys, this time we are reacting to Karan Aujla's Facts. With Deep Jandu, released in 2019. And yeah, almost a year back. Hit almost like 26 million records. Yes. 26 million views. I'm sorry, 26 million views. And it's released on the official page of Karan Aujla के हर song पे इतने views आ जाते हैं. But 2019 and 2020 में बहुत difference I'm seeing as the graph states. 2019 में उनकी progress थोड़ा सा slow था. But 2020 में it is just hitting the charts. Boom. We did not hear the song. We just added it to the playlist because we wanted to give a genuine reaction to it. So let's just dive into the video. Alright guys, when we searched fact on the YouTube search box and we got this, ये इंसान पूरा plane खा गया. पहले बाद में सर है या हथौड़ा. 90% लोग ये बातें नहीं जानते. On the third, it is trending Facts by Rehan Records. 1 year ago, 26 million views. मैंने सही conversion किया था 2.6 करोड़ का. I think we have to review now this thing, not the first video. Yes. Just getting into the video, guys. So guys, one fact about this video is we tried third time. This is the third time we are trying to record this. First time when we started, घर पे bell बजने लग गई and we had to get up and see कौन आया है. And I think we were having guests at our home and we couldn't record. Second time we thought of recording it. फिर हमारे घर पे जो बच्चे हैं वो रोना शुरू हो गए. बहुत तेज साउंड आने लगी. And third time today. No, the moment we settled them, light चली गई. हाँ. And third time today morning we set up कि आज छुट्टी है और आज हम रिकॉर्ड करेंगे और आज घर की लाइट चली गई है. ठीक है, आज लाइट चली गई है, इंटरनेट नहीं है, सो वी आर यूजिंग हॉटस्पॉट और हम टेरेस पे बैठे हैं विद ग्रीन स्क्रीन एट द बैक. आई होप वी विल बी एबल टू डू इट. और हवा बहुत तेज चल रही है, सो वी विल ट्राइंग टू सेटल दिस आउट. नाइस म्यूजिक है. करण औजला, डीप जांडू. हैंडसम है यार बंदा बहुत. एक तो एक ने रहे जो वेकने पैसे ने पाते हो यारा च फेकने इथे किसे दी ना कोई रियलिटी बंदे हो है नहीं रहे जो लिखने पैसे दे जोरा ते लिखने हुस्न दी गल की बॉडीਆਂ फेकने लिप ते लक बाल ते. ओ एक सेकंड मुझे नहीं पता था ये इतना फास्ट जाएगा सॉन्ग. तो guys, I'm really sorry. I have to make it slow क्योंकि मैं इसको समझना चाहता हूँ. Actually हम सिर्फ लिरिक्स से ही समझ पाएंगे. मैं लिरिक्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ. मैं उसको सुनना चाह रहा हूँ और नीचे लिरिक्स भी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं वीडियो भूल जाता हूँ. तो I'm gonna move it really slow. I'm just going back again. और इसने बहुत फाड़ू बात बोली थी अभी कुछ. I think we'll focus more on the subtitles now. नहीं, just listen to him. एक तो एक ने रहे जो वेकने पैसे ने पाते हो यारा च फेकने इथे किसे दी ना कोई रियलिटी बंदे हो है नहीं रहे जो लिखने पैसे दे जोरा ते लिखने हुस्न दी गल की बॉडीਆਂ फेकने लिप ते लक बाल ते अख फैशन बना लिया कुड़ी हर एक ने तेरे को तेरे मेरे को मेरे दिल हुंदे काले जो काले हनेरे मेहनत दा मुੱਲ ना हारी ਨੂੰ पता है ਉਹਨੂੰ पता जीने कपड़े ले बेड़े गल यार हैगी नदर नहीं रही बेबे ते बापू दी कदर नहीं रही ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਈ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾ. Did you hear it? What did he say?
Nikhil, I just have goosebumps only by just listening this song almost is a like minute. intense. हमने we started on a candid form कि okay did not facts कुछ होगा, expect it like but this. This is something like shit. Oh my God. He said Very उनसे deep song. उनसे पूछो जिन्हें को बापू मदर नहीं होंगे उनकी कदर पूछो. Yes. God. ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਯਾਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਗਊ ਆ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨੀ ਪੂਜਾ ਗਊ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਵਿਕਣਾ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਸਿਆਣਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਨਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਈਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਓ ਜਿਲਾ ਨਹੀਂ ਓ ਜਿਲਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਫਕਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸੈਟ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਬਸ ਟੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਰੈਪ ਨਾਲ ਦਾ ਟਿਕੇ ਕਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਚ ਗੌੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂਫਾਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਲੌੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਗੌੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ Fuck, he just said, I mean, like, look at the way he is rhyming. कह रहा आज ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲॉर्ड ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਚ लॉर्ड ਕਿੱਥੇ ਹੈ लॉर्ड ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ गॉड ਫਿਰ लॉर्ड ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਭ ਸੁਰਾਂ ਵੇਖੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ I mean, like, look at it what he wrote. Lyrics. ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਨ ਹੈ ਮੋਢੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਅਖੀਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕਮਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੱਬੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਸਾਈ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਬੜਾ ਗਵਾਇਆ ਲੱਭਦਾ ਫੋਟੋ ਚ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮਾਸੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ बेबे ने बाबू इतनी टाइम तुम दे दो मैं मिलना चाहता सी मिल नहीं पाया and I saw his tattoo on also. his, I think it is real. It is Mother real. and father and he's written I miss you mom and dad. Karan Aujla. Okay. Very good song. First of all, bow down to the folks who recommended this to us. We didn't know कि we were missing something like this. हमें नहीं पता था ऐसा कुछ है जो करण औजला ने बनाया है. Straight from his heart I would say. Straight from life. his heart. It is like life. मेरी जो लाइफ है मैंने उसको ना लिखा और उसको मैंने राइम में कन्वर्ट कर दिया एक पोएट्री बना दी उसकी. इट्स लाइक जैसे रैप होता है ना रिदम एंड पोएट्री इट्स लाइक मैंने राइम किया और साथ में पोएट्री डाल दी इन अ वेरी ब्यूटीफुल और इतना ब्यूटीफुल वीडियो है ये कि आई वुड लाइक मैं इसके बाद दोबारा देखूंगा ढंग से एक एक लाइन समझने के लिए. I had goosebumps just after listening to the 1 minute song. It's 2 minutes 56 seconds. मुझे एक चीज़ बता What is your favorite line out of this? कुछ अभी मतलब जो हमने सारा ग्राफ्स नहीं कर पाए मैं नहीं कर पाया. मुझे इंसिडेंसेस से पता चल सका कि इस गाने में क्या क्या चीज़ें हैं. द फर्स्ट पार्ट जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें ये था कि आजकल रियल कुछ भी नहीं है. They're all fake things. You have fake hair, your fake eyes, fake lips, fake body. Exactly real क्या है? जो जिसमें वो लिप जॉब करा रही थी. Yes. And the जो दिल्ली में 9,000 part- रुपए की होती है. अच्छा. You want to get it done? नहीं, I'm just figure it out why it has been. And the second one, let's get into the point. The second one was like अपने बेबे और माँ बाप की कदर नहीं है, फादर और मदर की जिसने कदर नहीं करी उससे पूछो जिसका फादर नहीं है. जिसके फादर मदर नहीं है. Yes, that was very touching actually. मतलब इसकी सारे lyrics was very nice. मुझे meaningful actually. मुझे दो इसमें सुने. मैं I'll just return back to that. एक तो जो सबसे I personally listen to Sadhguru a lot. I'm an Isha meditator and Isha volunteer. तो मैं Sadhguru we are Isha meditator and Isha volunteers. तो हम बहुत स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं तो उसमें एक जो करण औजला ने बात बोली है दैट इज वे ओवर द हेड. मैं प्ले करता हूँ. जस्ट लिसन टू दिस गाइस.
ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ Money the is money, not everything. Money the is actually material. not It is not about money. It is about any damn fucking thing outside of you. The material thing does not matter to your happiness. It is something within. And he just said it in a single sentence. जिसको elaborate करने के लिए 10-20 मिनट की speeches motivational speakers देते हैं. Actually, yes. उसने सिर्फ एक लाइन में बताया कि you become rich. वड्डे अमीरा तो It's okay, इसका मतलब वही था हाँ। कि जो गरीब है जिसके पैरों पे चप्पल नहीं है वो ज्यादा खुश है उस इंसान से जिसके पास गाड़ी भी है पैसे भी है सब Right. कुछ है because I think at the end the happiness is within you. Yes. It's not somewhere outside. And the second beautiful line he said is this one. इसमें मैंने एक और चीज सुनी जिसमें उसने कहा कि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं वो मेरे मामा मेरे पापा similar to this. हाँ I'll just try to play that as well. Guys, I'm doing it because I think I'm in love with the song. Just एक होता है ना कि who says love at the first sight is not true. I say it is true. I just fall in love. You fell in love with facts by Yes. Karan Aujla. So this is the line. This is the second verse, not a line, a kind of verse which I personally feel is fabulous. ठीक है? Let's just watch it. ਤਾਂ ਜਗੌੜ ਕਿੱਥੇ ਐ ਤੂਫਾਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਲੌੜ ਕਿੱਥੇ ਐ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਗੌੜ ਕਿੱਥੇ ਐ ਅੱਜ ਜੋ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ लब्बी नहीं जानती यो कॉर्ड कॉर्ड किथे किथे है? है So I mean, क्या बोल गया यार ये आदमी? It is like Karan Aujla dropped something very very massive. I do not know why it didn't shine up कि इतना shine क्यों नहीं हुआ ये song like the other songs जैसे बादशाह का बोला है. Okay, don't get sentimental by गेंदा फूल हाँ तो I am feeling really bad कि that he has listened that song but नहीं not this जो song. जो I mean I do not know where the industry not industry where the maximum focus is going. It is not about the music, it is about the sense of कि क्या निकल रहा है उससे. हाँ ठीक है एक पार्टी बैंगर होता है हमने सुना पार्टी बैंगर है लेकिन look at this. It is like No comparison with the party banger. Absolutely a stunning song. 100 it's like कि जैसे मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बाकी सारे आर्टिस्ट हो गए इवन एवरीवन इज गोइंग गुड इट्स लाइक कि सब सॉन्ग्स ड्रॉप कर रहे हैं फायर कर रहे हैं धड़ 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 सॉन्ग्स ड्रॉप हो रहे हैं एंड करण औजला जस्ट कम्स अप विद what do you call that bazooka and boom. So it's like 100 bullets of other artists and one bazooka of Karan Aujla. Facts. Yeah. So it is that level. That level of song. We would not play our game जो हम Right. खेलते हैं we will not play it because just review it would be a disrespect कि हम हमारी इतनी वो नहीं है कि हम इसको वो करें Review but I'll just ask her out of 5 is it 5 5. out of 5 if I could good more I mean this is a song which I would say कि मैं इससे बेहतर कुछ अभी तक नहीं सुना है मैंने it is something that fantabulous. Bow down to Karan Aujla, bow down to his fans, bow down to us as well कि हमें We got a chance to review it actually. we got a chance to review this and last words for Karan Aujla and facts. Amazing song. Thank you Karan Aujla for delivering such a beautiful song. Amazing lyrics, amazing direction, amazing Karan Aujla. Last request guys, this came in 2019. Let's just relive it, let's just reviral it, let's share this video as much as we can so that this song comes back again. I'll try to do this on my end where all of my Delhi folks, all of my folks in the metropolitan city who never heard about Karan Aujla or the Punjabi music industry, they think Punjabi music industry is Very Badshah. limited. No. Again, Badshah. ठीक है, I am no hatred, but I mean Badshah used to like. It's just that he doesn't like only one song of Badshah, that's Genda Fool. नहीं बहुत because सारे हैं it उसके says- song यार जैसे बहुत फालतू है. अच्छा, ठीक. But so the intent here is just to bring those folks which are really talented, God gifted, come to live again. So let's just share this. If you have liked this video, hit the thumbs up down there and show us love. हमें इससे 1, 2, 3, 5 5 yours, 5 mine. so 1,000 likes. 1,000 likes. Yes. If you give us 1,000 likes, it would be a blessing that we appreciate. We will acknowledge and we will love more. No, wait. Let's ask Raven Evil. You recommended us this song and we've actually done it. Just help us to share it with maximum folks as yeah. possible. And just let us reach 1,000 likes milestone. Yes.
We asked enough. 1000 ज़्यादा हैं but थोड़े से तो ज़्यादा है मांग लिए, दिवाली थी ना कल इसलिए. ठीक है. I hope you had a safe Diwali. Alright guys, So now it's my turn again. Those of you who have not subscribed our channel so far, I request you all to please subscribe our channel and hit the bell icon so that you never miss a video from us. Done? alright guys, this is Nikhil signing off. This is me, Bani, signing off. Adios.